Hello everyone. So today we are going to study the first chapter of Class 12 NCERT, that is the solid state. So you can keep your NCERT with you along with the notebook. You can take notes of the every important thing that we learn today. तो आपको बस ध्यान से सुनना है वर्ड बाय वर्ड हम NCERT केमिस्ट्री को पढ़ेंगे and it will be very helpful for your board examinations. So let us start. So we will talk about the solid state. Okay, so yes, let us start talking about the solid state. Okay, so it is unit 1. Yes, the solid state. So, the vast majority of solid state substance like high temperature, superconductors, and biocompatible plastics, silicon chips, etc., are destined to play an expanding role in future development of science. Okay, so what do we say that solid states they are very important for our future. Okay, apart from that, the common solid state substances that we use in our day-to-day lives are sodium chloride, like calcium carbonate. Okay, things like these we use regularly in our day-to-day life. Okay, moving forward. From our earlier studies, we know that liquids, gases are called fluids. Okay, because they have the ability to flow. Okay, so write it down. Fluids, the substances that have ability to flow. Okay, that's as simple as that. Okay, so this is what you have to know about the fluids. Okay, but today we are not going to talk about fluids. We are only interested in the solid state. So the fluidity in both of these substances on both of these states is due to the fact that the molecules are free to move about. Okay, so for liquids and gases, this substituent particles they can freely move. Okay, particles can freely move. Okay, so this is it. Then, when we talk about the solid state, okay, this explains. So, on the contrary, the constituent particles in solid states have the fixed positions and can only oscillate about their main positions. Okay, so after discussing about the liquids and the gases, we come to the solids and we say in case of solid state, the particles have fixed positions, and they can't freely move about their mean position. Okay, they can only vibrate a little bit. Okay, they can vibrate but only a little bit. Okay, so let us say we are talking about this particle. Okay, so I am just making this line to represent it. Okay, so if this is the main position of this particle, it can only move a little bit on both the sides about its mean position. Okay, linearly like this. Okay, continuously it can move like this. Okay, something like that. Okay, this explains the rigidity in solids. Okay, so yes, this is how we can explain that solids are rigid. Why? Because their particles can't freely move, they can only move about their fixed position. So that's why they are rigid. And these properties depend upon the nature of constituent particles in the binding forces operating between them. Okay, so this solid nature or this rigidity it depends on the binding forces and the nature of the particle. Okay, so these are the two important points: binding forces and the nature of the particles. Okay, these two are the important things. Okay, so yes, let's move forward. Okay, so the correlation between the structure and properties helps in the discovery of new solid materials with desired properties. Okay, so what do they say? The correlation is there between the structure and properties. Okay, if there is a certain structure of a solid, it will have certain properties, structure and properties.
So we study structure and properties. So what do we do if we want some desired properties? अगर हमको कोई specific properties चाहिए होती हैं किसी सॉलिड से, सो व्हाट डू वी डू, हम पहले स्टडी करके आते हैं, अच्छा इस स्ट्रक्चर से ये प्रॉपर्टीज हमें मिलती हैं, देन व्हाट डू वी डू, वी ट्राई टू सिंथेसाइज दी स्ट्रक्चर्स जो हमको हमारी डिजायरेबल यानी कि जो हमें जैसी चाहिए प्रॉपर्टीज वैसी दे. Okay, so this correlation helps us a lot. Okay, so yes, the correlation between structure and properties helps in the discovery of the new solid materials with desired properties. Okay, for example, carbon nanotubes are new materials that have potential to provide material that are tougher than steel, lighter than aluminium, and have more conductive property than copper. तो ये देखिए स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज का रिलेशन करके हमने क्या हम हमें पता चला कि जो कार्बन की नैनो ट्यूब्स हम डिजाइन कर पा रहे हैं उनके अंदर इतनी सारी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हैं. कौन कौन सी, जैसे कि वो लाइट है एल्यूमिनियम से, ओके, टफ है स्टील से ज्यादा टफ है. ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमें मिल गई वैसा स्ट्रक्चर बनाने पे. सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन सिंथेसाइजिंग दोस कार्बन नैनोट्यूब्स. Okay, such materials may play an expanding role in future development of science and society. Of course, इसी तरीके से साइंस में डेवलपमेंट्स होते हैं. सो वी नो अबाउट समथिंग वी स्टार्ट टू मेक मोर थिंग्स अराउंड द सेम थिंग. ओके, लैब में एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं टू डिजाइन मोर एंड मोर एफिशिएंट solutions to our problems. Okay, so some other materials which are expected to play an important role in future are high temperature superconductors. Okay, so you see जो solid state के अंदर important जहाँ पे research चल रही है, it can be nanotubes. Okay, it can be high temperature superconductors. Okay, high temperature superconductors. Okay, so if you are interested in research, so you can go for these topics, nanotubes, high temperature superconductors, and so on. Okay, yes. Magnetic materials and biodegradable polymers for packaging, biocompliant solids for surgical implants, etc. Okay, so all these things are the upcoming things in फ्यूचर जिनमें रिसर्च चल रही है, बहुत सारे स्कोप है डेवलपमेंट का और हम नई नई चीजें इन जगहों पे बना रहे हैं. सो जस्ट यू कैन सी हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस क्लास 12th एनसीईआरटी. while you are reading this NCERT you are learning the upcoming venues जहाँ पे research चल रही है. Okay, ऐसे topics के बारे में आपको पता चला होगा. It is just the first chapter of NCERT and just it is so amazing, right? इस पे research चल रही है. You can go to IITs, you can check out the um, labs there जहाँ पे actual में इन चीज़ों में research चल रही है. In fact, you can check out the international laboratories जहाँ पे इन चीज़ों पे research चल रही है. And when you have done your 12th, you have done your bachelor's, you can go for masters, you can go for PhD, you can go for research. Okay, so these are the topics you are getting introduced to these topics, so don't miss out on this chapter. It is very important. Okay, yes, so thus the study of the state becomes more important in present scenario. Okay, so you can see it is very important. We can't skip this chapter, right? Itna research chal raha hai. Someone from us will go forward and join this research, so it is very important for all of us to read it so that we can also, if we are interested, we can also move ahead and decide for ourselves if we want to do it for the for our life, right? So yes, let's move forward. Okay, so okay, so we are done till here. So in this unit, we shall discuss different possible arrangements of particles resulting in several types of structures and explore why different arrangements of structural units tend lend different properties to solids. We will also learn how these properties get modified due to the structural imperfections or by the presence of impurities in minute amounts. ओके, सो इन दिस एंटायर चैप्टर आपको बता दिया गया कि क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग. हम पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और किस तरीके से इन अरेंजमेंट से प्रॉपर्टीज में फर्क पड़ता है और किस तरीके से जो इम्प्यूरिटीज आती हैं उनकी वजह से प्रॉपर्टीज में
फर्क पड़ता है। ओके, सो दिस वाज इट। अब हम चलते हैं पेज नंबर 2 पे। Okay, so general characteristics of solids. So what are the general characteristics of solids? Okay, so yes, in class 11th, you have learned that matter can exist in three states, namely solids, liquids, and gases. Okay, so these are the three states of matter. Under a given set of conditions of temperature and pressure, which of these would be the most stable state of a given substance depends upon the net effect of opposing factors. Okay, so at any given temperature and pressure conditions, what happens? किसी भी given temperature pressure condition में कोई भी substance है solid, liquid या gas exist कर सकता है। ये बात depend करती है दो factors में। Okay, these two opposing factors. कौन से हैं वो opposing factors? These are intermolecular forces of attraction, which tend to keep the molecules or atoms ions closer, and the thermal energy, which tend to keep them apart by making them move faster. At sufficiently low temperature, the thermal energy is low and intermolecular forces bring them so close that they cling to one another and occupy fixed positions. These can still oscillate about their mean position and the substance exists in solid state. The following are the characteristic properties of solid states. Okay, so what we just discussed. So at any given temperature and pressure conditions, what happens? Two opposing forces are there. Okay, so one is intermolecular force of attraction. Okay, so ये force क्या करता है? As you can understand by the name itself, intermolecular force, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स। ओके, अट्रैक्टिव फोर्स है, दोनों को अट्रैक्ट करके रखेगा, दोनों पार्टिकल्स को क्लोज टुगेदर। ओके, ये हो गया अट्रैक्टिव फोर्स। देयर इज वन अपोजिंग फोर्स, दैट इज रिपल्सिव फोर्स, और वो होता है थर्मल फोर्स। ओके, थर्मल एनर्जी। ओके, थर्मल एनर्जी विच टेंड टू कीप देम अपार्ट। ओके, ये हो गया फर्स्ट फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड थर्मल एनर्जी विल ट्राई टू टेक देम अपार्ट। ओके, तो ये हो गई आपकी थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। और ये रहा आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दो अपोजिंग फोर्स हो गए हैं। अब क्या होता है, ये दोनों ही फोर्सेस काम करते हैं एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, और जो रिजल्टेंट होता है फाइनली, जो इनका आउटकम निकलता है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका सब्सटेंस सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैसियस होगा। तो देखिए, जब आपके टेम्परेचर जब आपका टेम्परेचर कम होता है तो आपका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी अच्छी मतलब काफी हाई हो जाता है, और ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि जब थर्मल एनर्जी लो होती है और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, तो आपका सब्सटेंस सॉलिड स्टेट की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपकी ये वाले फोर्स ज्यादा होंगे इन फोर्सेस से, तो क्या होगा, ये फोर्सेस क्या कोशिश करेंगे कि सारे पार्टिकल साथ में रहें, और जैसे ही सारे पार्टिकल साथ में आएंगे वैसे ही आपका सब्सटेंस हो जाएगा सॉलिड। सारे पार्टिकल साथ में आएंगे तो आपका सब्सटेंस हो जाएगा सॉलिड। और सॉलिड के अंदर खासियत क्या है? सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमने जैसे पहले डिस्कस किया है कि लिक्विड्स या गैसेस की तरह आप दूर दूर तक फ्लो नहीं करते हैं, वो बस अपनी एक मीन पोजीशन पे इस तरीके से वाइब्रेट करते रहते हैं। ओके, फिक्स्ड पोजीशन पे बैठे रहते हैं और अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं। ओके, ऑसिलेशन करते रहते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। ओके, सो यस, ये हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट कैसे बनता है? किसी भी गिवन टेम्परेचर प्रेशर के अंदर क्या होता है कि हमारे पास दो एनर्जी है, थर्मल एनर्जी और हमारे पास है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो ये दोनों फैक्टर्स अपोजिंग फैक्टर्स हैं, दोनों के दोनों फैक्टर्स काम करते हैं। थर्मल एनर्जी पार्टिकल्स को दूर ले जाना चाहती है, और जो आपके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पार्टिकल्स को पास में लाना चाहते हैं। और ऐसी कंडीशन, जिस कंडीशन में आपके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, थर्मल एनर्जी आपकी कम होती है, तो उस केस में क्या होता है, पार्टिकल्स वाकई पास पास आ जाते हैं। और एक बार वो पास पास आ जाते हैं तो फिर वो इस तरीके से अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते रहेंगे और दूर नहीं जाएंगे, और ऐसी स्टेट को हम सॉलिड स्टेट बोलते हैं। सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज होती हैं, मास डेफिनेट होता है, वॉल्यूम शेप भी उनका फिक्स्ड होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होते हैं, वही पास पास होते हैं उनके पार्टिकल्स।
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होते हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली हेल्ड करके रखते हैं। फिर बात आती है देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस हैव फिक्स्ड पोजीशंस एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। सेम बात है आपको, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं सॉलिड स्टेट के, वो काफी पास पास प्रेजेंट होते हैं और बस मीन पोजीशन के पास में इस तरीके से वाइब्रेट करते रहते हैं, दूर दूर तक नहीं जाते हैं। ओके, अगर इसकी मैंने मीन पोजीशन ये बताई है आपको, तो ये बस यहाँ पे ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा, ये वाला यहाँ पे अपनी मेन पोजीशन के आसपास वाइब्रेट करता रहेगा, सब इसी तरीके से वाइब्रेट करते रहते हैं अबाउट देयर मेन पोजीशन। ओके, सो दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। ओके, तो अब देखिए इतने पास पास पार्टिकल्स हैं, तो क्या इनको आप प्रेशर लगा के और पास में ला सकते हैं? नहीं ला सकते, इनकम्प्रेसिबल हो जाते हैं ये। ओके, रिजिड होते हैं, इनको अगर आप फोर्स लगाएंगे तो इनका शेप भी चेंज नहीं होगा। ओके, थिंक अबाउट सम सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। ओके, घर पे आपने सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स देखे होंगे, उसको अगर आप फोर्स लगाते तो उसका रिजिड रहता है, वो शेप नहीं चेंज करता। ओके, शेप नहीं चेंज करता। तो बस इस तरीके से आप सारी प्रॉपर्टीज समझ सकते हैं। अब देखेंगे अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, ये दोनों चीजें क्या होती हैं, चलिए इसको समझते हैं। amorphous and crystalline. Okay, so solids can be classified as crystalline or amorphous on the basis of the nature of order present in the arrangement of their constituent particles. Okay, so कोई substance amorphous है या crystalline है, किस पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ओके, नेचर ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ओके, कोई सब्सटेंस अमॉर्फस है या क्रिस्टलाइन है, किस पे डिपेंड करता है? नेचर of order of arrangement of particles. Okay, ये क्या बात हुई? Let us discuss it. तो किस तरीके से आपकी सॉलिड के पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं, इस पे डिपेंड करता है आपका कि सब्सटेंस आपका अमॉर्फस है या फिर क्रिस्टलाइन है। ओके, किस तरीके से अरेंजमेंट हुआ है पार्टिकल्स का, इस पे डिपेंड करता है। Okay, crystalline solid usually consists of a large number of small crystals, each of them having a definite characteristic geometrical shape. Okay, the arrangement of constituent particles, atoms, molecules, or ions in a crystal is ordered and repetitive in three-dimensional. Okay, if we observe the pattern in one region of the crystal, we can predict accurately the position of particles in any other region of the crystal, however far they may be from the place of observation. Okay, this crystal has a long range order, uh, which means that there is a regular pattern of arrangement of particles which repeats itself periodically over the entire crystal. Sodium chloride and quartz are typical examples of crystalline solids. Okay, तो ये हो गई आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को पहले हम उसके बेसिक्स को समझेंगे। तो देखिए, पहले तो हमने कहा क्रिस्टलाइन को कैसे डिफाइन करेंगे, नेचर ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स देखना है आपको, क्या नेचर है पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का उस क्रिस्टल के अंदर। तो चलिए, मैंने ये क्रिस्टल ले लिया, ये क्रिस्टल मैंने ले लिया इस तरीके से, इतना बड़ा मान लीजिए मैंने क्रिस्टल ले लिया। अब इसके अंदर आपको ये समझने की बात है कि अगर इसके अंदर एक फिक्स्ड पैटर्न में अगर पार्टिकल्स अरेंज हैं, ओके, यानी कि इस तरीके से अरेंज हैं, तो आप दूसरी यूनिट उठाओगे तो उसमें भी सिमिलर अरेंजमेंट होगा। ओके, सेम अरेंजमेंट होगा, एक सेम अरेंजमेंट होगा, एक स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, एक यूनिट में जो अरेंजमेंट मिलेगा वही अरेंजमेंट आपको पूरे क्रिस्टल में मिलेगा, पूरे क्रिस्टल में वही चीज रिपीट होगी। ओके, लेट मी राइट इट, फिक्स्ड अरेंजमेंट, फिक्स्ड यूनिट arrangement is repeated throughout the crystal. क्या समझे आप इस बात से? एक छोटी सी यूनिट, एक सिंपलेस्ट यूनिट आप निकालेंगे उस क्रिस्टल को, पूरे क्रिस्टल को एनालाइज करके आएंगे, फिर आप कहेंगे ओह, ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है क्रिस्टल के अंदर जिसको पूरे थ्री डायमेंशंस में रिपीट किया जा रहा है।
ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस। एक फिक्स्ड यूनिट होती है, एक फिक्स्ड यूनिट होती है, उस फिक्स्ड यूनिट अरेंजमेंट इज रिपीटेड। ओके, एक फिक्स्ड यूनिट का जो अरेंजमेंट है वही पूरे में रिपीट हो रहा है, पूरे के पूरे लैटिस में रिपीट हो रहा है, पूरे 3 डायमेंशंस में। ये यूनिट है तो नेक्स्ट यूनिट यहाँ पे इस डायमेंशन में, अगली यूनिट यहाँ पे, राइट, और तीसरी यूनिट यहाँ पे। तो इस तरीके से वही यूनिट पूरे स्ट्रक्चर में रिपीट हो रही है बार बार बार। तो ये हो गया आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। एग्जाम्पल्स हैं आपके सोडियम क्लोराइड, एग्जाम्पल है आपका, ये देखिए यहाँ पे क्वार्ट्ज का एग्जाम्पल दिया गया है। ओके, इसके अलावा आप देख सकते हैं आपको पोटेशियम ब्रोमाइड एंड सो ऑन। ओके, देयर आर n numbers of examples for this. Moving forward we will learn in depth about the crystalline solids. amorphous solids के बारे में हम इतना नहीं पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर ही ऑलमोस्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे बेस्ड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की खासियत क्या है, एक छोटी सी यूनिट रहती है, फिक्स्ड यूनिट रहती है, और वही यूनिट आपकी पूरे 3D स्ट्रक्चर में बार बार रिपीट की जाती है। ओके, फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है। ओके, फिक्स्ड यूनिट अरेंजमेंट है, वही बार बार रिपीट किया जाता है। तो ये हो गए आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, इसको आप दोबारा पढ़ के देख सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स, वही यूनिट रहेगी आपकी, ईच ऑफ देम हैविंग डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप, उसका फिक्स्ड शेप होगा, कहाँ किस पोजीशन पे कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। ओके, ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, पार्टिकल्स आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ जो अलग अलग साइट्स मैंने बनाई हैं, ये साइट्स में हो सकता है एटम्स हो सकता है आयंस हो सकता है ये मॉलिक्यूल्स हो, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आपने डिस्कस कर ली। सो दिस वाज अबाउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कमिंग टू द अमॉर्फस सॉलिड्स। अमॉर्फस, ओके, glass, rubber, and many plastics do not form crystals when their liquids solidify on cooling. They are called amorphous. The term amorphous comes from the Greek word amorphos, meaning no form. Okay, so amorphous word का root word है amorphos. Okay, amorphous, और amorphous का मतलब होता है no form. Okay, so there is no form. क्रिस्टलाइन के अंदर क्या था, एक फॉर्म थी, एक फिक्स्ड फॉर्म थी जो कि 3 डायमेंशन में रिपीट हो रही थी, लेकिन अमॉर्फस के अंदर देयर इज नो फॉर्म। तो देखिए क्या होता है, जब आप इनको मेल्ट करके सॉलिडिफाई करते हैं, मेल्ट करने के बाद कूल करते हैं जिससे कि वापस से सॉलिड बन जाए, तो इस टाइम पे क्या होता है, जब ये सॉलिड बन रहे होते हैं तो इनके अंदर नो फॉर्म होता है, कोई ऐसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं बनता है कि फिक्स्ड क्रिस्टल हो जिसका 3 डायमेंशन में रिपीटेशन हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है बस। ओके, तो ये होते हैं अमॉर्फस, दे हैव नो फॉर्म। The term amorphous, okay, yes, we just learned. Okay, so the arrangement of constituent particles that can be atoms, molecules or ions. Okay, amorphous के केस में भी जो जो constituent particles हैं, they can be atoms, they can be molecules or they can be ions. In such a solid has only short range order. Okay, तो इसको हम क्या बोल देंगे? Okay, so let me clear everything. Amorphous के केस में अमॉर्फस के केस में आप बोलेंगे देयर इज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? ओके, देखिए, जैसा कि हमने अभी तक डिस्कस किया, देयर इज नो ऑर्डर। ओके, देयर इज नो ऑर्डर। तो ठीक है, आप ऐड कर रहे हो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को, लेट अस से हम मॉलिक्यूल से बना रहे हैं सॉलिड, तो आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हो एंड वी आर सेइंग देयर इज नो ऑर्डर। ओके, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ वेरी शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ओके, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ सम वेरी शॉर्ट रेंज ऑर्डर, तो उसको हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर कह के बोल देते हैं। ओके, we just say it has short range order. Whereas जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं, they have long range order, long range, यानी कि बहुत बहुत डिस्टेंसेस तक सेम यूनिट रिपीट होती चली जाती है। ओके, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। Okay, in such arrangements, a regular and periodically repeating pattern is observed over short distances only. ओके, तो जो जो पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ यूनिट्स होगा अमॉर्फस के अंदर, वो बहुत ही शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा, लेकिन क्रिस्टलाइन के अंदर क्या है, वो रिपीटेशन ऑफ जो यूनिट्स होता है पीरियोडिकली, वो काफी लॉन्ग रेंज तक होता है। ओके, ये बात आपको नोट करने की थी।
Okay, regular patterns are scattered and in between the arrangement is disordered. Okay, so there are some patterns in amorphous, there are some patterns, and then there is disorder, like completely disorder, and there is again some pattern. Okay, so we call it short range order. Let us say यहाँ तक कोई order follow रहा था, and then there was some, there was no order region, then there was some order again. So yes, this is like this. The structures of quartz crystalline and quartz glass amorphous are shown in figure 1.1a and b respectively. While the two structures are almost identical, yet in case of amorphous quartz glass, there is no long range order. Okay. ओके, सो ये रहा आपका क्वार्ट्ज और ये रहा आपका क्वार्ट्ज ग्लास। ये देखिए, हम ये आपका क्रिस्टलाइन है, ये अमोर्फस है। अमोर्फस के अंदर आप देख रहे हैं कि एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा। यहाँ पे देखिए कितना फिक्स्ड पैटर्न है, कितना फिक्स्ड पैटर्न है। लाइक यस, इट इज कम्प्लीटली फिक्स्ड। लेकिन इसके केस में क्या है, फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। देर आर सर्टेन यूनिट्स दैट आर रिपीटिंग, आफ्टर दैट फिर एक अलग तरीके का पैटर्न आ जाता है, फिर अलग तरीके का पैटर्न आ जाता है। ओके, समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग। ओके, yes, so of amorphous quartz glass there is no long range order. The structure of amorphous solids is similar to that of liquids. Okay, so जो amorphous solids का structure होता है वो liquids जैसा होता है। Okay, due to the differences in arrangement of the constituent particles, the two types of solids differ in their property. तो क्योंकि इनके particles के arrangement हैं दोनों तरीके के, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के बीच में इनके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट अलग है, इसलिए इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती हैं। ओके, तो ये आपने चीजें देख ली हैं। मूविंग फॉरवर्ड,